Good evening, sir. Sir, we'll start the session so shortly. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. We'll be starting this session shortly. Okay, sure.
A very good afternoon to all present here. Today amongst us we have a person who is the epitome of hard work and dedication. Ips Shubham Agrawal cleared the civil service examination in 2020, achieving an All India rank of 153 after 5 years of resilience and passion. Today he runs his own Telegram channel, which currently has more than 1800 students connected. This was an initiative taken by him to guide all UPSC aspirants even at the dead of the night. We, Dishanvita and Dipanjali, your hosts for today's evening, are beyond ecstatic to have you today with us and would love to welcome you to the event, which I'm sure will be a treasury of insightful experiences to learn from. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Good afternoon, sir. sir. How are you today, sir? Fine. Finally, a day of holiday. That's really great. Yes. So to begin with, what instilled in you the passion to become an IPS officer? I think it was a very gradual process, and it started with my parents. But eventually, when I learned about it and the work that the officers or the public servants do, that motivated me a lot because even a small act can make a lot of difference. So that prompted me a lot to take this service, along with obviously stability in job to be practical. And that motivates a lot of students to join this service. So, sir, UPSC is one of the toughest exams in India. So, like, were you like nervous before the exam? And like, what were the thoughts which were going through your mind during the paper? I think nervousness is like a very crucial part of this exam. And but I strongly believe that if you are emotionally invested in something, the nervousness is bound to come because you have invested efforts, your time, and emotions. But it is not about how nervous you are, how stressful you are. It is about how you handle that. And in my 5 attempts and 7 years of this tired, full efforts, I would say even before interview, nervousness was at its peak. Like to give an example, in my first interview in my fourth attempt, uh, the interview went not that well because of the nervousness. Even the basic questions were answered, but not that great. So in second interview, I kept in my mind that this nervousness should not be repeated. And for that, I still remember when I was sitting just outside the interviewer room, I started singing songs in my head, random songs. I don't even would sing usually, and that kept me like a bit down and detached from what is going to happen just after 5 minutes. So just few efforts brought by us, and even in your institute or even in our general life, like when our father or mother scolds us and we keep our nerves down कि okay okay कोई बात नहीं तो वो जो छोटी छोटी बातें होती हैं I think that keeps us grounded and helps us to fight nervousness and fear, and that's what I did. It's very true, sir. And like, it's very great how you learn to get with each interview and your efforts. It's very nice. Yes, thank you. So was your family supportive when you decided to prepare for UPSC? And like, who all helped you in your UPSC journey? Extremely supportive, and sustaining for 7 years was extremely difficult, but they were like तू बस कर हम तेरे साथ खड़े हैं क्योंकि I hope English won't mind है ना हिंदी English won't mind, right? Yeah, I don't mind. तो I still remember उन्होंने कहा था कि तू बस कर हम तेरे साथ खड़े हैं. तो like many people say words are stronger than actions a lot of times, and वो जो एक support होता है वो बहुत जरूरी होता है, but it doesn't mean कि जिसके पास support नहीं है वो नहीं कर सकता, right? क्योंकि जिस दिन आपका हो गया तो सब लोग यही कहेंगे कि अरे ये लड़का या लड़की तो मैं कहते ही था करेगा, अफसर बनने के लिए ही पैदा हुआ था. वो जो होता है ना टिपिकल सेंटेंस,
So just wait for your day. I have waited for, I still remember, 7 years and 2 months. I went to Delhi on like 19th of July 2014, and the result which finally got me selected was on 24th of September 2021. So this journey of 7 years and 2 months was like extreme for me. I have seen every kind of emotion, every kind of failure, and never be afraid of failure. I'm telling you, never be afraid. If you learn from every failure, and these are not just words to say, I have really lived these words. क्योंकि शुरू के जब दूसरा अटेम्प्ट में फेल हुआ था, आई वॉज शैटर्ड. ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल बात करें तो ऐसा लगा यार क्या करें, होगा नहीं होगा, वुड आई डू समथिंग इन लाइफ और नॉट. बट वो होता है ना, फिर मेरे बड़े दो भाई हैं, आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स, आई हैव माय पेरेंट्स. दे वर लाइक, अरे तू करना, टेंशन क्यों लेता है, कुछ तो अच्छा कर ही लेगा. एंड यू आर फ्रॉम सच अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ऑल ऑफ यू आर डेफिनेटली going in the right direction. So you have still have some security. I did not have any. I'm from a very normal college. ठीक है. A lot of people think कि IIT, IIMs, etc. ऐसा कुछ नहीं. I'm from a normal government college from Bhopal and did economics honors. So I always say it's about what you do, but before that, how you think. Like our director always say, if you know why, then how can be very easy. Because that why is clear in your head. And recently I was studying a book, Mindset, written by Dr. Carol S. Dweck. And the book was amazing. Like a lot of things were learned from experience, but people also should try such things because that teaches you how to live life. How to live life. And my parents have taught me that right attitude. And I think that's what is needed. Like you people are from tech, a lot of people are from tech background. Even if you're going to run a startup needs definitely out of box thinking. But to sustain that failure time of period or the down period, you need the right mindset, right attitude. And I think if you all work on that, everything is possible, everything. Sir, I'm sure that we look up to failure in a different way now. Yes. Yeah. So, like, what were some major strategies and plans which you followed while preparing for your UPSC examination? See, initially, definitely it was like a random attempt trial thing. Nobody was there to guide me. So I started with same coaching and investing a lot of hours in coaching, understanding things, going for notes, etc. Eventually, when I failed, like I could clear prelims all my 5 attempts, but I could not clear mains in my first 3 attempts. So when I failed first time, and before that, when I cleared prelims first time, it was like on my head, अरे UPSC तो मैं कर लूँगा, prelims तो पहली बार में ही हो गया. And I scored around 158 marks in prelims based on official list. So that was like huge. और दिमाग पे तो चढ़ ही जाता है यार, नॉर्मल इंसान है. बट जब फेल हुआ तो एकदम धड़ाम से आदमी गिरता है, ठीक है, उसको लगता है अरे मैं फेल कैसे हो गया. एंड दैट टाइम आपकी फिर लर्निंग स्टार्ट होती है, आप सीखने की कोशिश करते हो कि कहाँ गलती हुई. और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि कुछ जो बेसिक ट्रिक्स हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, extremely important, especially the kind of exam and the paper that is coming up. If you know the base, if you know the fundamentals of every subject, your paper will be easier for you. Second thing is making notes, because you have more than 14-15 subjects, and that too diverse. Like we cannot connect security with the geography, or it's too difficult. Well, like other day you are reading ocean current and the next day you are reading about naturalism. So it's like very difficult for even remembering all these things. But again, I would say it's not about how you connect it. It's about how you look every syllabus of this preparation. So I made sure that I have very short notes of every part. And notes, I would say, comprise mostly of 5 things. Yes, Mohammad Saif Hashmi, we have to make notes of static part, because that is the fundamental part. Like if you go for mains question,
Then out of 20 questions, usually 7 to 9 questions are directly from the syllabus. Just look at the main syllabus, and those questions can directly be addressed through your notes if you are focusing well. Like I still remember there was a question on irrigation and SHG, pressure groups, and which is directly written in the syllabus. So there are two benefits of it. First is you save time, because if you have notes, you have revised it, you can quickly write it within 5 to 6 minutes. That will help you in your other difficult questions. And the second important thing is you can exactly reproduce what is asked. So it's about time management and efficiency. So notes help you in that. After that, definitely answer writing. Definitely, because you learn everything, you don't know the checker personally, or you will go to his home and tell कि अरे भाई मुझे बहुत आता है, मेरे को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है. ऐसा कुछ नहीं होता है. तो he will perceive you through your copy, right? How you are writing those 250 words, how you are writing the optional answers. So in that, focus on answer writing. And in that as well, rather than just test series, go for daily answer writing. If you write daily, what are the advantages? I would say, like if you are learning a sport, okay, so if you do it daily, then it gets into your head, you know your strengths, weaknesses, body capabilities. So you can repeat and learn just the next day. Same goes with the daily answer writing. If you just write in like 7 or 10 days in a test series, that won't fetch you a lot of good pointers. Understood? So I would say these 3-4 pointers are the basics. Otherwise, I could speak for another hour for the whole preparation. It's really nice, sir. I'm sure it must have helped those who are preparing for UPSC. So my next question is, what was your family's reaction like when they got to know that you had secured 153rd rank in UPSC exam? It was surreal. I still remember I was sitting like just outside my home because I knew the results are about to come. And as usual, I wasn't expecting कि यार फिर से होगा, क्योंकि मुझे फेलियर की इतनी आदत पड़ गई थी कि ठीक है नहीं होगा टाइप. तो जब हुआ तो गलती से क्या हुआ कि I read my roll number wrong. तो मुझे लगा मैं फिर गया. फिर मैंने कहा नहीं यार चेक करता हूँ. फिर मैंने चेक किया and fortunately I was in the list. तो इतने ज़्यादा इमोशंस थे, मतलब within 5 minutes हंस रहे थे, मतलब it was emotional. And it is not just about the result, it was the efforts of 7 years. मतलब I think मेरी पूरी जवानी यूपीएससी में ही गई है. ठीक है, 20 साल में शुरू किया था, 27 साल में हुआ है. तो I still remember I cried for like 12 to 15 minutes in front of, like, I was just sitting and I could not control, and even I am not able to control as of now as well. Because whenever I remember that emotion, so it's not just about that result, it's about your passion, your inner instinct that यार ये करना है मुझे. सबका एक सपना होता है, तो this was my dream. That's it. So it was surreal, definitely surreal. That's really nice. So my question is, like, becoming a civil servant, right? Like, means we have to serve the political masters rather than the public as well. So what are your thoughts on this statement? See, it's not about serving a particular sect of society, whether it's people or vulnerable people or political masters, etc. It's about doing what you are there to do. Like as a police officer, I have the foremost duty of securing the people, according to me. Even before law and order, if something happens in my area and if I'm not able to secure people, then I'm not able to do my duty, according to me. So it's not about what others say or what I am directed to do. Definitely we do follow, but above that we follow our conscience. We follow what we truly believe in. And I think that is the foremost thing that I look for personally. So it's not that they are always wrong. Definitely they have some wisdom, they have experience, you learn from them, but listen to your heart.
I say learn from people, but do not imitate. Choose your own path, do your own things, never imitate. That is my answer to them. So that's good to know. Like, So, according to you, what is the real meaning of success? Also, during the years of your preparation and your like dedicated service towards the nation, what do you feel has been your biggest achievement during that time? Like which time? During which time? Like the time, I mean, your journey, during the whole journey. I think the biggest achievement for me has been working on self. Uh, because people look for external factors, and I talk to a lot of aspirants, and when they're not able to clear paper, they usually blame UPSC for bringing such paper. And I believe that is not the right attitude we should have. So what I believed is कि work on self, and even I used to blame in my first attempt कि अरे यार ये कैसा पेपर लाते हैं, लेकिन इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि यार गलती तो अपनी है, कहीं ना कहीं गलत तो अपन है, या अपन ही प्रिपरेशन में कमी है या वक्त में कमी. तो ये सबसे पहले आई वुड से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू. सॉल्व करने से पहले भी आइडेंटिफिकेशन करना कि हाँ ये दिक्कत है. तो वो आई थिंक वर्किंग अपॉन सेल्फ वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट. इट मेड मी more calm, patient in my what I think or what I do. It helped me balance my life with my professional life. Like my 30 minutes of gym was like fixed daily, even though the next day is mains. Okay. How that helped me? That helped me to calm my nerves. Because even during exam, when you have to write 20 answers, and I still remember one of even me, myself, I got a lot of pain in my hand writing continuously, because in a day we have to write 6 hours. But finally, I am putting with that Bolini and all, and again going for the exam. So it was extremely difficult. And even one of my friend got spasm in his hand and he could not write. So this requires a whole lot of efforts, but working on self is the biggest achievement. Even while you all are doing whatever in your life, and even UPSC, rather than looking for external things, first work on yourself. Be brutally honest with your strengths and weakness. When you are brutally honest with yourself, you will do wonders in life. I'm telling you, wonders in life. Like many have aptitude of technology, ठीक है, बट फैमिली प्रेशर में अरे सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, सिविल सर्वेंट. अरे when you can become Sundar Pichai, ठीक है, who can transform the whole world, then why to look for other things? So go for your inner strengths and weakness rather than society's perception of your strengths and weakness. So that is what I learned. That's really a very motivating answer indeed. so we'll surely keep in mind that we should not always follow what the society says, and maybe look up to what we want to follow as well. So my next question would be like, was it always your dream to become an IPS officer? I wouldn't specifically say IPS officer, but definitely clearing the UPSC exam and the top two services, IAS and IPS both. So I was determined that if I get any of these, I would be contented and I would do what I actually want to do in life. So I think it worked well and I got one of them. So that's really good. So also, like in the chat just a second, section. sorry to interrupt. Whatever Yeah. doubts are coming in the messages, I will answer each and every doubt just after the session. So keep posting your questions. Yeah, we'll do that. So through all the struggles, what are some of the things that restored faith in yourself and let you continue your studies? ऐसा कुछ नहीं होता है यार कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि खुद में फेथ चालू हो जाता है. एंड इट्स अ जर्नी, ठीक है. और फेथ थर्ड अटेम्प्ट के बाद जब नहीं हुआ था तो बल्कि शैटर हो गया था फेथ, तो कि यार अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं. लेकिन वो होता है ना कि थर्ड अटेम्प्ट के बाद तो मैं 10 दिन तक खुद को संभाल रहा था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. फिर मैंने खुद से सोचा
कि तू जीवन में क्या करना चाहता है। और तो मैंने सोचा यार ऑप्शन क्या होता है इंसान के पास, या तो वो बिजनेस करेगा या प्राइवेट जॉब करेगा, या तो जो मैं कर रहा हूँ वो कंटिन्यू करूँ। बिजनेस मेरा मन नहीं था, क्योंकि आई फील कि मैं नहीं कर पाऊंगा उस चीज़, क्योंकि वो एक अलग माइंडसेट चाहिए उसके लिए। प्राइवेट जॉब आई फील कि यार वो तो मैं अगर नहीं हुआ तो भी कर ही सकता हूँ कहीं ना कहीं। तो आई फील यार एक जीवन है, एक सपना देखा है, क्यों ना उसको और ट्राई करें। और वो मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैंने खुद को समझा लिया था कि जो भी रिजल्ट आएगा, बी इट इनसाइड और आउटसाइड, माय सिलेक्शन होता है नहीं होता है, मतलब लिटरली ये वर्ड आया था कि भाड़ में जाए दुनियादारी, मैं अपने ड्रीम के लिए जीऊंगा। अब होगा नहीं होगा, लेट द टाइम डिसाइड, लेट माय एफर्ट्स डिसाइड, बट मैं अपना 200% दूंगा। और लिटरली उसके बाद एक रिलैक्सेशन आया। और इवन मेरा एग्जाम होता था जैसे 9th को, तो 6-7 तक मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन आराम से रिलैक्स्ड हूँ, हंस रहा हूँ। तो मेरे आसपास वाले लाइब्रेरी वाले कहते थे यार भाई तू इतना रिलैक्स्ड कैसे है। मैंने कहा ये यार मत पूछ, बहुत टाइम से आया है और ये अच्छा ही है अगर रहे तो आई थिंक वो थोड़ा वर्क किया मेरे फेवर में। That's really nice, sir. So, you're mute you're muted, Deepanjali. sorry, Yeah. my bad. So, where was your first posting, and what were the major problems you faced during this tenure? Sorry to say, but I'm under training, so I'm still in academy. But we are taught a lot of things. And when I went for my police station visit as an officer trainee, the first and foremost challenge was what I felt was ki addressing even the smallest problem a person can have. Because what happens is for us, um, uh, it is quite difficult to see कि यार इतना छोटा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एक गरीब आदमी के लिए जो 1,000 रुपए महीने का कमाता है, उसके लिए अगर उसके 300 रुपए चोरी हो गए या उसके गिर गए, आप सोचो उसकी महीने की 1/3 ऑफ इनकम चली गई। बट अगर आप एब्सोल्यूट वे में देखें तो इट्स जस्ट 300 रुपीज। वी थिंक अरे इसका इतने का तो पिज्जा ही आ जाता है यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके लिए उसके बच्चे की वो मंथली एजुकेशन एक्सपेंस हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि rather than just looking an absolute view, having an absolute view of things, we should think in a prescribed way rather than generalized. Like एक डॉक्टर लिखता है ना आपको बुखार है तो बुखार की दवाई है, इसकी दवाई, तो पहले समझो that EI quotient you must have, emotional intelligence, अगर वो है, जो कि मुझे लगा कि थोड़ा सा आजकल कम हो रहा है, तो अगर EI सही है तो आप एक्चुअली यू कैन डू वंडर्स इन दिस सर्विस एंड यू कैन एक्चुअली make changes in people's life. That's what I felt. So, sir, from the COVID-19 pandemic point of view, like, did you face any challenges, or what have, and also what has been your major learnings during the pandemic? You could share. बहुत थी यार। कोविड में क्या हुआ कि आई वाज इन दिल्ली फॉर लाइक बिफोर कोविड। कोविड में घर आए, घर की आदत थी नहीं पढ़ने की मेरी, तो बहुत डिफिकल्ट था घर पे वो सस्टेन करना खुद को, क्योंकि ऑब्वियसली घर तो घर रहेगा, मजा मन भी नहीं करता, ऐसा लगता है ये कर लो वो कर लो। तो फाइनली मैंने किसी से बात की, फिर उसकी लाइब्रेरी जाता था, तो डेफिनेटली वो पब्लिकली ओपन नहीं थी बट जाता था। और कोविड में इश्यूज आते थे, रिसोर्सेज का इशू आ जाता था कि कहाँ से करें क्या करें। फिर ज़्यादा किसी से मिल नहीं पाते थे बट प्रिपरेशन तो करनी है, तो वो खुद को संभालना इमोशनली, एंड जिम भी बंद हो गया था, तो थोड़ा मोटे मोटे भी हो ही जाते हैं इंसान। तो फिर वो भी दिक्कत आने लगी थी कि क्योंकि बैठ के पढ़ना लिथार्जी आती है, फिर लिखना, तो वो बहुत से चैलेंजेस थे। बट आई थिंक बहुत कमी थे इन कंपैरिजन टू व्हाट अदर्स हैव फेस्ड, क्योंकि एटलीस्ट आई वाज फॉर्चुनेट टू हैव बेसिक थिंग्स, बट बहुत लोगों को वो भी नहीं थी, तो वो लोग भी पेपर निकाले हैं और मैं भी। तो इट्स ऑल अबाउट आवर पर्सपेक्टिव्स। That's very true, sir. So people are, like so
people are so confused about their career options. So, like, how did you know that civil services is the best profession for you, considering that UPSC is the toughest examination in the country? बहुत रैंडमली पता चला था यार. मतलब आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी पता चल सकता है कि उसे बनना क्या है, स्पेशली जब 11th-12th में अपने मस्ती मजाक और दोस्त यारी सब चलती है तो समझ नहीं आता कि क्या करें. तो आई वुड से कि टेक योर टाइम. ठीक है, टेक योर टाइम और एसेस करो. जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ही बनना है, या जरूरी नहीं है कि टेक्नोक्रेट ही बनना है. इट्स अबाउट टेकिंग योर ओन डिसीजन. थोड़ा समझना, जैसे मैंने जब मैंने बोला पेरेंट्स, और फिर ऐसे लोगों से मिला और बहुत से ऐसी मैंने देखा जो लोग करते थे द वर्क दैट दे यूज्ड टू डू. तो मुझे लगा यार इससे मुझे मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर मैं ये कंटिन्यू करूंगा. और इवन एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो वहां से आई स्टिल रिमेम्बर, एक बार एक जैगुआर निकली और उसके जस्ट पीछे एक नॉर्मल, उस टाइम बत्ती चलती थी तो बत्ती वाली गाड़ी निकली. तो मेरे को पता नहीं थॉट आया कि यार एक जैगुआर तो ठीक है, लेकिन जैगुआर वाला कभी बत्ती नहीं ले पाएगा. समझ लो, पैसों से. तो वो जो एक फीलिंग थी यार, दिस रिक्वायर्स अ होल लॉट ऑफ ऑनर टू एक्चुअली गो इन दोज व्हीकल्स. एंड जब मैंने इस बार फर्स्ट टाइम वर्दी पहनी तो यार वर्दी का एक नशा होता है ना. जब वो वर्दी में स्टार आपके लगते हैं यहाँ, और जब टोपी लगती है, तो आई एम टेलिंग यू वो बेस्ट फीलिंग्स होती है. आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स व्हाइल आई एम थिंकिंग अबाउट इट. आई थिंक दैट कुलदीप इज आल्सो गेटिंग राइट. तो वो जो होता है ना, एक ऑनर होता है. इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव. लाइक जब भी हम लोग को डेली वर्दी पहननी होती है तो आप एक एक साइड देखते हो, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, अच्छा ये पहना है, वो पहना है. दैट्स अ डेली थिंग, क्योंकि यू आर फीलिंग ऑनर्ड टू बी इन दैट. तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं विच ड्राइव्स यू. तो डिपेंड्स, अगर आपको मनी एक्साइट करती है, गो फॉर अ बिजनेस, गो फॉर अ प्राइवेट जॉब दैट गिव्स यू मनी. और कुछ गलत नहीं है, मनी को टैबू बना रखा है यार. ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है. अगर आपको लग रहा है आपको पैसे कमाने, तो इतने कमाओ कि फिर खुद को सेटिस्फाई कर दो. तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू डू. तो खुद को फील करो कि करना क्या चाहते हो. डेफिनेटली यू विल चूज अ गुड करियर ऑप्शन. So during your entire journey, like whom did you look up to as an inspiration? मेरे बड़े भाई कह लो, है ना, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज्यादा स्ट्रगल किया था. क्योंकि मैं क्या थर्ड हूँ, तो मेरे दो बड़े भाई हैं, तो उनकी स्टोरीज और ज्यादा इंस्पायरिंग थी. तो लाइक टू कोट वन, मेरे जो मुझसे जस्ट बड़े वाले भाई हैं, तो वो उनको क्या हुआ था कि वो यूएस जाने वाले थे तो उनका पैर टूट गया था. तो लिटरली जो एंकल था वो ऐसे टेढ़ा हो गया था. और उस स्ट्रगल में भी वो एग्जाम देने जाते थे, वहां यूएस गए, ठंड में बर्फ में चलते थे, काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे. एंड टुडे ही इज ओनिंग अ स्टार्टअप इन और ही इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट विद अ वेरी गुड सैलरी. तो जो स्ट्रगल उन लोगों ने देखा था, तो वो मुझे बहुत सिखाता था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू ऑल, एंड मार्क माई वर्ड्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल. करोगे, सोचोगे तो सब हो जाएगा. बस ठहरने वाली बात है, पेशेंस वाली बात है, कितना ठहर पाओ. क्योंकि आई वुड लाइक टू कोट वन, विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, द लास्ट ऑफ ह्यूमंस फ्रीडम. उन्होंने कहा था, ही सेड कि द लास्ट ऑफ ह्यूमंस फ्रीडम, नोबडी कैन योर टेक योर फ्रीडम टू थिंक, टू एक्ट, टू फील. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि nobody can take that away. So just exercise it well, exercise it in the right direction, and you can do anything. That's really nice, sir. Yes. Sir, what is the highlight of your, like
journey till now as an IPS officer? Like, what gives you the job satisfaction and makes working hard to choose this profession worth it? यार अभी देखो, ऑब्वियसली ग्राउंड पे काम नहीं किया है तो वो अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, बट एक दिन ही गया था, पुलिस स्टेशन विजिट थी एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, तो आई स्टिल रिमेम्बर एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट था। तो बीच में एक टेम्पो रुक गया था एंड आई वाज ऑन बाइक पेट्रोल विद अ सबऑर्डिनेट। तो वो जो एक रुका तो पूरा ट्रैफिक जैम हो गया था, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा रोको गाड़ी, और फिर उसको क्लियर करवा के उसको वो कराया। तो पीपल वर सेइंग कि यार एक, बिकॉज यहाँ लिखा रहता है आईपीएस एंड स्टार्स एंड, तो वो कहते कि सर आप ये सब, मैंने कहा वो मतलब दे वर एस्टोनिश्ड कि मैं ये सब काम क्यों कर रहा हूँ। तो ये मैंने समझा कि ये परसेप्शन गलत है। एज एन ऑफिसर माई ड्यूटी इज टू डू एनीथिंग दैट कीप्स पीपल्स लाइफ इजियर, राइट। तो वो जो छोटी छोटी बातें होती हैं, मुझे सेटिस्फेक्शन ये मिला है, वर्दी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है लोगों में, लेकिन डर भी है। तो मुझे लगता है वो डर की जगह सिर्फ रिस्पेक्ट हो और एक अप्रोचेबिलिटी हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत इश्यूज हैं लाइफ में लोगों के, बहुत इश्यूज। अगर उन्हें बिना डर के अगर वो आपके पास आ भी पा रहे हैं ना, और आप उनकी प्रॉब्लम सुन के थोड़ा भी एड्रेस कर दो, तो आई एम टेलिंग यू mental anxiety of this country can be reduced to half, literally can be reduced to half। तो छोटी छोटी बातें, अभी और एक्सपीरियंस बाद में बताऊंगा जब सर्व कर लूंगा, तो आई थिंक ज्यादा बेटर इनसाइट्स दे पाऊंगा। So there must have been days where you might have felt very stressed and overworked. So like, what do you like do to freshen up and relax yourself a bit? I think not one or two, but numerous times we all felt that as an aspirant, as a human being, कभी घर के इश्यूज, कभी पढ़ाई के इश्यूज, कभी रिजल्ट के इश्यूज, मतलब इश्यूज की तो कोई कमी नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो वो कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर सात्रे कि वी आर डूम्ड टू एक्सरसाइज आवर फ्रीडम एंड वी आर डूम्ड टू लिव इन दिस लाइफ। तो वो बहुत ही डीप वर्ड्स हैं कि आपको जीना तो पड़ेगा ही। तो बहुत से ऐसे थे, बट आई एम टेलिंग यू इट्स अबाउट द राइट माइंडसेट। बस ये समझ लेना कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अगर अच्छा टाइम है वो भी जाएगा और बुरा है तो वो भी जाएगा। और आई नो मैं थोड़ा सा बाबा टाइप साउंड कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है यार। मतलब मैंने ये लाइफ जी है और मैंने समझा है कि जैसे अगर आप, मेरा बीच में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत लोगों ने पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जस्ट मीन्स के पहले एक्सीडेंट हुआ। मैं एग्जाम देने जा रहा था, 15 मिनट पहले हुआ। अब दो ऑप्शन थे, या तो मैं उससे लड़ लूं, है ना। अब उसने ठोक दिया, यहाँ लग गई और एक्सेट्रा 50 झंझट है, 8-10 मिनट बचे थे। मैंने कहा छोड़ यार, मैंने देखा तो यहाँ से खून निकल रहा था, पट्टी बांधी और लिटरली फिल्मी सीन हो गया था, बहुत फिल्मी सीन हो गया था। पट्टी बांधी, मुंह धोया और मैंने पेपर लिखा फिर 6 घंटे। तो वो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो बस ये ध्यान रखो कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो उस मोमेंट में जियो और अपना 100% दो। मैं तो यही सीखा है लाइफ से। So the accident which you spoke about, so like like most of us would make excuses, right? Ki abhi to ye ho gaya, so we wouldn't give the exam. What was that, that determination you had ki no, I have to go and give the exam? I think आंसर ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपका VIT एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है, रिवेरा, है ना, ऐसा कुछ होता है ना, राइट? Yes sir, yes sir. तो आई वाज रीडिंग अबाउट इट, तो thousands of people come in that festival, right? और मुझे पता है एक छोटा सा इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट। कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया, लेकिन यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट इट कि यार ये इवेंट मुझे बेस्ट बनाना है अभी तक का, राइट? तो वो जो एक चाह होती है, एक अंदर की एक पैशन होता है कि नहीं, एक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मजा आना चाहिए लोगों को। सेम पैशन था
की याद बनना तो है, and eventually that was my first interview. So it's about how much you have invested in those things, those moments, वही आपको help करता है. So, like after serving this country for so long, what problems do you think India needs to overcome, according to your perspective? Seeing. Sorry, the voice broke. What? So, like you said, you are under training, right? So, like according to you, what do you think the problems India still needs to overcome? I think lot of problems, lot of problems. Anil, I'll take all the questions. Don't worry, I'll take the questions. So, lot of problems, but the base of every problem, I still believe that is not doing your duty well. Like agriculture की scheme I was reading a report. So it was a scheme of 58,000 crores. 58,000 crores. And मुश्किल से 10% पैसा स्पेंड हुआ था. ठीक है, इट्स अ सीएजी रिपोर्ट. आप ये सोचो, अगर पूरा हो जाता तो एग्रीकल्चर का पोटेंशियल कितना यूटिलाइज कर सकते थे, फार्मर्स की लाइफ में कितना रेवोल्यूशन आ सकता था, सुसाइड्स कितनी कम हो सकती थी, और क्या क्या नहीं कर सकते थे अपन एक रूरल एरिया में, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है जिस दिन अपन ये सीख जाएंगे कि ड्यूटी, और आई वुड से द करप्शन पार्ट ऑफ दिस कंट्री, अगर वो डाउन हो पाए, अगर वो अपन लोग अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर पाए, तो आई थिंक इट वुड बी वंडर. मतलब मजा आ जाएगा, अलग ही कंट्री बनेगी. एंड जो अभी अमृत काल चल रहा है, तो जो नेक्स्ट काल होगा, आई थिंक वी कैन बी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड. So I think that forms a base. For every problem, this is the problem. That's very correct. Yes. So, sir, like, what would you address, like, to the students who are present here, how to kickstart the preparation? Like, we are Yes. of the age of 19 to 20 years. So, what would you say? See, start with NCRTs. Okay, that's the fundamental of everything. I won't say all the NCRTs. On my Instagram, I keep talking to people, and if anybody wants to know, I'll send the highlighted NCRTs that is important. Okay, that are important to read. So start with NCRTs, and then jump to reference books. Then the question comes how to make notes of NCRTs. So don't ever make notes on the first reading, because first reading teaches you what it is. And then in the second reading, use NCRTs and the content, then put it in your reference books. Always try to collate things so that you don't have to study a lot of times the same thing. I think that is how we should start. Sorry to interrupt, but I think we should take few questions because people are asking a lot of questions. And We can do that as well. I would take few questions first. Yeah, Telegram sure, channel. sure. Anand is asking Telegram channel link. I think it is IAS prerequisite, and you can even message me on Insta. Don't worry, I'll talk about it. Medical test. What to tell about medical test? मतलब it's a very normal test. इतना कोई आर्मी वाला टेस्ट नहीं होता है, बट कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं. अगर आपको कुछ एक्सट्रीम नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, जस्ट गो फॉर इट. वो हेल्प भी करते हैं, बट ऐसा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए. बिल्कुल ही कुछ हो तो दिक्कत आती है. टेस्ट कंडक्ट कैसे होता है, तो जस्ट इंटरव्यू के अगले दिन होता है. डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां जाते हो. कोई आपको स्पेसिफिक इशू है तो मैसेज मी, देन आई विल टॉक अबाउट इट. यू माइट नॉट बी कंफर्टेबल. फिर कैन यू शेयर आपका सेकंड बर्जन का वो टाइम को आपने क्या आंसर किया था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ था, और अंतर देखो, आई कांट से कि अंतर क्या था. सबकी अपनी अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन प्रीलिम्स में मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि सब लोग सेम बुक सेम रिसोर्सेज पढ़ते हैं, सभी लोग. ठीक है, आप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? पहली बात, मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं,
तो मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में कईयों चीजें होंगी जो आपको याद नहीं हो रही होंगी, ठीक है। जैसे अभी जस्ट एक ने पूछा क्वेश्चन कि हाउ टू रिटेन एंड मेमोराइज थिंग्स, तो आपको कई बार चीजें याद नहीं होंगी या डिफिकल्ट लगेंगी। तो आपका फोकस क्या रहना चाहिए कि अगर 80% सिलेबस फिर भी आपको थोड़ा ठीक है, 20% है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, उनके निमोनिक्स बना लो। बहुत छोटे छोटे निमोनिक्स होते हैं, मैंने तो बनाए थे। जैसे वुमेन पे क्वेश्चन आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 19 और 35 में क्या 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 हुआ, तो अगर आपने एक लिंक बनाई है और एक सेपरेटली लिख दिया है, तो फिर आप मेमोराइज कर पाएंगे उसको, पहली बात। दूसरी बात, आप, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं, जब प्रीलिम्स का पेपर देते हैं तो वो पेपर से भी याद करने की कोशिश करते हैं चीजें, कि पॉलिटी में ये पढ़ लूं, प्रेसिडेंट पढ़ लूं, या ज्योग्राफी में करेंट्स पढ़ लूं, एक्सेट्रा। बट फिर पढ़ाई और पेपर देने में फर्क क्या रह जाएगा। तो जब आप पेपर दे रहे हो तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप ये सीखो कि पेपर देते कैसे, हाउ टू अप्रोच द प्रीलिम्स पेपर, हाउ टू अप्रोच द मेंस पेपर। ना आते हुए भी क्वेश्चन करना कैसे है। तो आई डेवलप्ड द ट्रिक ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉमन सेंस। तो इंटेलेक्चुअल कॉमन सेंस का क्या मतलब है, आपने पढ़ लिया इतना, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपको लगता है यार ये मैंने वहां पढ़ा था, ये ऐसा था, वो वैसा था, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इंटेलेक्चुअल क्या होता है, आपकी नॉलेज यूज करो बट वहां कॉमन सेंस लगाओ। ये मत सोचो यूपीएससी ऐसा तो नहीं करेगा यार, इतना इजी तो नहीं देगा, या ऐसे नहीं सोचेगा। यूपीएससी क्या सोचेगा ना, भगवान को भी नहीं पता, मुझे लगता है, ठीक है। वो अलग ही कुछ देता है मतलब। तो अगर आपने इंटेलेक्ट विद कॉमन सेंस जोड़ा तो प्रीलिम्स में वुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एक्सट्रीमली हेल्पफुल, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स बनाओ, निमोनिक्स एंड शॉर्ट नोट्स, प्रीलिम्स में बहुत काम आएंगे आप लोगों को। फिर after the completion of your training, what are you looking most forward to? I think serving. I would love to work on the field, interact with people, and try to solve whatever problems they have. Then, Anil, you can ask your question. Ninth, अरे आप ninth में हो? यस तो सर। अनिल आप सर ninth में हो? सर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ सर, आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते बिल्कुल। ऐसा करो अनिल, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, ठीक है। क्योंकि नाइन्थ में हो आप, तो अभी तो आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आप अभी से एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, और 3 साल में ये ट्राई करो कि जीएस का अच्छा बेस बनाओ। उसके बाद मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि अभी वक्त दो थोड़ा चीजों को, है ना। उस टाइप का अपना पोटेंशियल डेवलप करो, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो, प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो अनिल तब ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हैं। ओके सर। सर मैं इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज कर दूँ सर, आप रिप्लाई कर दें। ओके सर, थैंक्स। और सिलेबस डिकोडिंग, कृतिका सिंह पूछ रही है, सिलेबस डिकोडिंग विच इज द इनिशियल एंड टफेस्ट पार्ट ऑफ द कोड प्रिपरेशन। सी, सिलेबस डिकोडिंग के दो तरीके हैं, या तो आप खुद से मेन सिलेबस खोलो और करते जाओ, या फिर आई वुड से कि ये कोचिंग्स क्यों बनी है, ठीक है। इन लोगों ने इतना फ्री चीजें दे रखी हैं, मस्त उनको यूटिलाइज करो। तो विजन के जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है, तो मेंस का सिलेबस रखो अपने साइड में, और पीवाईक्यू वो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देते हैं, तो लुक एट दैट, ठीक है। और उससे ये समझो कि वो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, या फिर कहाँ से बेटर पढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब जाके आप चीजें समझोगे। तो रादर देन पुटिंग 5-6 डेज कि मैं कैसे सिलेबस डिकोड करूं, उनको यूज करो और अपना मेन सिलेबस लगा लो। आई थिंक ये दोनों करोगे तो कृतिका दैट विल हेल्प यू, ठीक है। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट गवर्नमेंट फीस एंड स्कीम एंड आई थिंक व्हाट आर टैटू वगैरह कोई लोड नहीं है, रिलैक्स करो, टैटू वैटू सब चल जाता है, ठीक है। मेन चीजों पे फोकस करो, इधर उधर ज्यादा सोचोगे तो प्रिपरेशन खराब होगी, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस्ड रहोगे, ठीक है। एथिक्स की प्रिपरेशन, एथिक्स
नोट्स यूज कर लो, ठीक है। बहुत सी कोचिंग्स हैं, आई वुड नॉट नेम एनी कोचिंग, बट जो आई पर्सनली प्रिफर्ड अतुल गर्ग सर के नोट्स, तो वो अच्छे नोट्स हैं। उससे अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, एंड आई इवेंचुअली मेड ओनली 7 पेज नोट्स, ठीक है। 7 पेज में मेरा पूरा एथिक्स था। तो वो जो नोट्स बनाते हो तो उसको मैंने 15 बार पढ़ लिया था, तो आराम से आई कुड रिप्रोड्यूस थिंग्स ऑन पेपर, ठीक है। और एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है लिखना। आप लिखते कैसे हो? यूज गुड एग्जाम्पल्स, क्योंकि एथिक्स में लिखना, हाँ भाई बड़ी बड़ी बातें कर दी, इंटेग्रिटी की बात कर दी, डेडिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, लेकिन उनको दिखाओ एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि थ्योरी विद एप्लीकेशन लिख पाओ, तो वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। रही बात केस स्टडी की, तो केस स्टडी में क्या करना कि 5-6 टाइप की केस स्टडी होती है, जैसे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, प्राइवेट पर्सन के साथ, या फिर सीनियर सबऑर्डिनेट, है ना, एनजीओ के साथ, एक्सेट्रा। ऐसी 6 टाइप की केस स्टडी होती है, देखना तुम लोग विजन के एनालिसिस देखोगे, उससे भी समझ आ जाएगा। और उन केस स्टडीज पे एक बेसिक फ्रेमवर्क्स बना लेना। तो जब वो बेसिक फ्रेमवर्क तुम लोग के दिमाग में रहेगा, तो जब वहां पे सडनली एक क्वेश्चन आएगा, तो यू विल राइट मच मोर देन व्हाट अदर्स पीपल विल राइट, एंड दैट टू रेलेवेंट। तो ये बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। एथिक्स में मैं एनपीए में ही हूँ, हैदराबाद, आई एम इन एनपीए, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हो चुके हैं। फिलोसफी ऑप्शनल, आई हैव अ होल डिफरेंट सेशन फॉर इट। फिलोसफी ऑप्शनल के लिए देखो, बुक्स तो ठीक है, बट 3-4 कोचिंग को मिक्स करना, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है फिलोसफी ऑप्शनल। मजा बहुत आता है पढ़ने में, एकदम ऐसा लगता है ब्रह्मांड का ज्ञान हो रहा है आपको, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, बेहतरीन बुद्धा उद्धा सब पढ़ रहे हो, लेकिन उसको आंसर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो पतंजलि सर के नोट्स अच्छे हैं उसको हिमांशु, जो AIR 26 था, टेलीग्राम पे अवेलेबल है उसके नोट्स, उनको मिक्स करना। और आंसर राइटिंग आई वुड से कि VVRIS बेटर है, अम्बुज सर, वो आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स देंगे। तो ये 3 का मिश्रण करोगे तो यू वुड स्कोर वेल। I think Deepanjali and Dishanjita, I'm done with these questions. You can ask your questions. Sir, you're certainly an inspiration to many. So, what message would you like to give to all of us listening to you? यार मैसेज तो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन foremost message would be identify your passion, ठीक है। And as the great philosopher Spinoza said कि पैशन जो होता है, पैशन इज ड्राइव्स यू, पैशन कीप्स यू गोइंग। कि अगर सचिन तेंदुलकर पैशनेट नहीं होता क्रिकेटर का, तो ही वुडंट हैव बीन द गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो सिमिलरली एक अगर लेबर इंसान अगर अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए पैशनेट नहीं होगा, तो वो डेली सुबह उठ के अपनी बॉडी नहीं तोड़वा पाएगा, ठीक है। तो चूज योर पैशन। एंड स्पिनोजा सेड कि पैशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन योर फ्रिवलेस डिजायर्स, क्योंकि पैशन बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। पैशन कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स लेना भी पैशन हो सकता है, लेकिन अगर ड्रग्स लेना ही है तो अपने करियर का नशा करो। ये सोचो कि जिस दिन मैं वर्दी पहनूंगा, मेरे मेरे पेरेंट्स या मेरे खुद में एक जो ग्लिटर होगा आपकी आंखों में या आपकी बॉडी लैंग्वेज में, उस चीज का नशा करो। तो पैशन शुड बी बेस्ड ऑन योर रीजन, पैशन शुड बी बेस्ड ऑन योर राइट थिंकिंग, राइट माइंडसेट। अगर आपने वो पैशन रखा है, तो आई एम टेलिंग यू, ये सारे एग्जाम निकलेंगे। स्ट्रेटेजी, मेरे जैसे 100 टॉपर हैं, यूट्यूब पर हैं, वो सब आपको बता रहे हैं। मैं इंस्टा पे लोगों से बात इसलिए करता हूँ ताकि उन्हें बता पाऊँ, टेलीग्राम चैनल इसलिए खोला है कि मैं बता पाऊँ, लेकिन मैं आपको तब हेल्प कर पाऊंगा जब आप खुद को इंटरनली हेल्प करोगे। तो जब तक अंदर से वो होता है ना, अगर हिंदी में, कोर हिंदी में कहूँ, आग, जुनून, वो लेकर आना। अब तुम चाहे एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनो, चाहे स्टार्टअप खोलो, चाहे एक प्राइवेट नौकरी करो, जिस दिन तुम ये समझ गए कि आग इतनी जरूरी है जीवन को जीने के लिए और जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, देखो छोटा मोटा सब कर लेते हैं, ठीक है। आई एम नॉट डिमीनिंग एनी वर्क, डिमीनिंग एनी जॉब, इट्स अबाउट योर माइंडसेट। तो बड़ा अगर करना है तो बड़े चैलेंजेस के लिए रेडी रहो, बड़े सेक्रीफाइसेस के लिए रेडी रहो। जिस दिन ये माइंडसेट बना लोगे, तो
यार मैं तो फिर भी बहुत छोटा एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तुम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हो. तो just have that mindset. So That's we'd really like to inspiring. hear. So we'd That's like really to hear inspiring. more, sir. But due to the time constraints, we have to wind it up. And for all the audience who have more queries, like Sir said, please reach out to him on Instagram and Telegram. And Sir, you're welcome to share the link in the chat box. I would just write wait. Yeah, sure, sir. Someone is asking some best movies. तो जो देखना है देखो यार. मैं तो मूवीज प्रेफर करता था कि थोड़ी हंसी मजाक वाली हो, लाइटर मूवी हो, ताकि मजा आए जरा जीवन में. ज्यादा डीप मूवी नहीं देखता था प्रिपरेशन के टाइम. अब तो कुछ भी देख लेता हूँ. ठीक है. तो जय हिंद एवरीवन. आई होप जो थोड़ा बहुत मैंने बोला इट वुड वर्क फॉर यू एंड यू विल वर्क एवरी डे. यू विल वर्क एवरी डे ताकि सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, अपने सोसाइटी के लिए नहीं, खुद की नजर में कह सको कि जो मैंने सोचा था या जो मैंने सपना देखा था वो पूरा कर सको. ठीक है. आई वुड लव टू सी यू ऑल ग्लोइंग एंड शाइनिंग लाइक एनीथिंग. और कभी बाद में अगर मिले तो अगर ऐसा पता चला कि आपने यहाँ आए थे और ऐसा हुआ था, तो आई वुड लव टू नो दैट. ठीक है. चलो. That was Thank a you, sir. wonderful session. We are very inspired by your journey and experiences, and I speak for everyone present here. On behalf of everyone, I'd like to thank you, sir, for taking time out of your busy schedule to share a few pearls of wisdom with us. I'm sure after listening to your vast experiences, each one of us is going to leave this session with a learning which will help us immensely in our personal as well as professional lives. On behalf of everyone, I'd like to thank you, sir, for being present here and providing insights into your valuable thoughts and experiences. And thank you all for being such a wonderful audience. Thank you, sir. Thank you, Dishanvita Thank and you, sir. Deepanjali, for Thank you, sir. interacting so well. Thank you. Thank you. Thank you, sir.